everyone. You're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik, and it's 1, 2, 3, 4. Very interesting visuals. Australia have posted 123 runs at the loss of 4 wickets. तो वो बन जाता है 1, 2, 3, 4. काफी interesting है. Another interesting fact that Australia are now leading by 296 runs. That's the exact figure that India posted today. 296. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है. जडेजा ने 2 विकेट निकाले हैं और बात करें हम ये लास्ट सेशन की तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि 33 ओवर्स 100 रन्स 3 विकेट्स काफी कुछ चला है. पर आगे की राह क्या होने वाली है आइए बात करते हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट ताउस रिजवी और मेरे कलीग सौम्य कपूर और बंसल शाह से. तो सब लोगों को लेके चलेंगे हम इस लाइव शो में, एक एक करके सबसे सवाल पूछेंगे. ताउस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पूरे जो ये 3 दिन हुए हैं, 3 दिन, आज तीसरा दिन खत्म हो गया है, सबसे इंटरेस्टिंग सेशन मुझे सिर्फ ये वाला लगा. यहाँ पे काफी कुछ हुआ. इंडिया की तरफ से भी हमने देखा कि विकेट निकाले जा रहे हैं, फील्डिंग भी हमने देखी किस तरीके की फील्डिंग हुई है, कुछ कैच छोड़े गए. ऑब्वियसली बहुत सारी चर्चा हुई है. उमेश यादव ने 1 विकेट ले लिया है, बड़ी चर्चा चल रही थी, अरे उमेश यादव को क्यों रखा है, 1 विकेट ले लिया है, स्पिन हो रही है, बहुत कुछ चला है यहाँ पर. हाउ विल यू सम अप दिस सेशन? I mean, the most important thing यहाँ पर एक बेस्ट इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए क्योंकि आपके ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों चले गए. जो सबसे बड़ा मेजर, जो अगर उनको कंटिन्यू करते, जो फर्स्ट इनिंग में जो उन्होंने किया था, पूरा काया पलट गई थी, जिसकी वजह से हम बैकफुट पे आगे पूरे टेस्ट मैच में. अभी भी हमारे बस में ये टेस्ट मैच है नहीं जब तक कि कुछ ऐसा मिरेकल नहीं हो जाए जो अजिंक्य रहाणे ने एक हद तक करने की कोशिश की. एक 89 ब्यूटीफुल 89 टिपिकल खड़ूस बैटिंग मुंबई स्टाइल में जैसे होती है वो किया, और साथ में शार्दुल ठाकुर ने किया. How is that Mumbai style of batting? Absolutely, Khadus could have been much more, but Shardul Thakur and Ajinkya Rahane, typical Khadus kind of batting, and this is how Mumbai has been dominating Indian cricket, domestic cricket. Khadus batting that was required on this, and especially from Rohit Sharma as well. But यहाँ एक सेकेंड, मुंबई के बारे में बात करें, मैं जरा सा चाहूंगी एक और मुंबईकर के बारे में भी आप जरूर बात करिएगा, रोहित शर्मा. वो आप मत पीछे छोड़िएगा क्योंकि आपने कहा कि मुंबईकर ऐसी बैटिंग करते हैं, ऐसी स्टाइल रहता है उनका, खड़ूस बैटिंग स्टाइल. रोहित शर्मा का तो नहीं नजर आ रहा. Absolutely नजर नहीं आया, and he is a very different breed altogether. Like अगर आप सोचेंगे कि रोहित शर्मा या पृथ्वी शॉ काइंड ऑफ प्लेयर्स, देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, सूर्य कुमार यादव, बट वो इंटेंट होता है, वो खड़ूस इंटेंट होता है. आपको वहां पर विकेट पे चिपक के खेलने का स्टर्बन ग्रिटीनेस. अभी मैं वही पढ़ रहा था कि आपको वहां पर यू हैव टू बी डिसलाइक्ड बाय योर ओपोनेंट्स बिकॉज यू आर देयर ऑन द विकेट, यू आर नॉट गिविंग अवे योर विकेट इजीली. So that is what Ajinkya Rahane showed almost till like he scored that 89, and Shardul Thakur, he joined Don Bradman and Alan Border, one of the greats, to hit 3 consecutive half centuries above 50 plus scores at the Oval, which is beautiful. But then यहाँ पर थर्ड सेशन कितना भी, आज का जो थर्ड सेशन कितना भी इंटरेस्टिंग हो जाए, कितना भी हमने अच्छा गया होगा, मतलब अभी भी मैच हमारे हाथ में नहीं. हमको मिरेकल करना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे ने किया था एज ए कैप्टन, वो यहाँ पर करना पड़ेगा. और अगर आपके पास 400 टारगेट है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है कल आने तक, क्योंकि आपके पास 2 दिन है, मगर स्काइज भी आपके फेवर में नहीं रहेंगे. जो वेदर अपडेट्स है अभी तो क्लियर दिख रहा है हमको यहाँ से फिलहाल, तो मतलब आई थिंक वी आर स्टिल सेटल्ड. यू शुड बी हैप्पी. आज थोड़ा सैटिस्फाइंग रहेगा, घर पे जाके चैन से सो सकते हैं लोग अपने होटल रूम में. यही सेशन था सौम्या जो कि इंटरेस्टिंग लगा. इससे पहले जितने भी सेशंस हुए वो काफी मोनोटोनस जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे थे. तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पकड़ बहुत अच्छी है, 296 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हम बड़ा स्कोर आगे तक लेकर जाए जब कल बैटिंग आएगी. पर एक बात यहाँ पर ताउस ने अच्छी करी कि आपके पास ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ नहीं है, यहाँ पर आपके पास लाबुशेन और ग्रीन है. लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया में कितना दमखम है, इसके जो टेल एंडर्स है, क्या वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है. तो आपको क्या लगता है कि जब कल ये बैटिंग करने आएंगे तो इनके पास वो कैलिबर है, वो कैपेबिलिटी है कि आप बड़ा आगे तक खेल सके? आप टेल एंडर्स पे जा क्यों रहे हो, पहले लाबुशेन और ग्रीन को हटा तो दो. लाबुशेन आपका नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन है यार, कैसे राइट ऑफ कर रहे हो? ये खड़ा और जैसे खड़ा हुआ है ना, ये अकेला 150 ओवर करेगा अभी. इट्स अगेन एंड सोते हुए खड़ा था आज, तो सोते हुए खड़ा था, फिर भी 115 बॉलें खेल गया, वो 20 ओवर खेल गया. अगेन आई एम सेइंग हॉरिबल कैप्टेंसी. फिर उमेश यादव को बॉलिंग दिए जा रहे हो, ये मतलब ये क्या थॉट प्रोसेस है यार?
रविंद्र जडेजा आपको विकेट निकाल के दे रहा है, आप फिर बॉलिंग ले गए उमेश यादव के पास, एक हैंड से डलवा लो ना फास्ट बॉलर। यहाँ पर सौम्या एक बात आप मुझे बताइए, जडेजा जब बॉलिंग करने आए 2 विकेट उन्होंने निकाल लिए हैं, स्पिन यहाँ पर हो रही है, आपको याद आई अश्विन की कि आपको तब भी रोहित की याद आ रही थी कि अरे कितनी खराब अश्विन ने प्लेइंग 11 बनाई है। अश्विन की याद आ रही है तो रोहित की याद कैसे नहीं आएगी? वो है कि रोहित की याद आई रही है उन्हें बार बार जितनी बार भी कुछ खराब चीज हो रही है। आप कितना भी शील्ड कर लीजिए, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को इस समय कोई डिफेंड नहीं कर सकता। दैट वाज अबाउट हिज कैप्टेंसी। अगर आप अपनी 11 लेकर नहीं उतरते तो बॉस फ्लाइट लेने से पहले रेजिग्नेशन दे देना कैप्टेंसी से। बॉस, इट्स अ शेम दैट you don't trust R. Ashwin. I mean, Australia has been trusting Nathan Lyon, whether it's Australia, whether it's England, whether it's India. आपने एक बॉल देखा होगा, एक Hmm. बॉल देखा होगा जो वो अजिंक्य रहाणे को जब बॉल कर रहे थे, रहाणे स्टेप्ड आउट ट्वाइस टू नेगेट दैट, जो वो टर्न उन्हें मिल रहा था, एक ही एंड से मिल रहा है, वो एक ही जगह रफ क्रिएट हुआ है वो, लेकिन वो हो रहा है ना, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। और मान यार लेते आपके हैं कि सोनिया यहाँ पर मान लेते हैं कि जल्दी आउट हो जाते हैं कल के दिन में, तो आपके बैटर्स को, इंडियन बैटर्स को, नेथन लायन को भी फेस करना है, और तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपने अश्विन को छोड़कर कितनी बड़ी गलती करी है। WTC I'll tell you something. आप नेथन लायन को फेस करने जब उतर रहे हैं ना, तो आपको अपनी एबिलिटी को बैक करना है। इन सबके पास 200 100 और 200 है। आप नेथन लायन को नेगेट कर सकते हैं, वो 3 बॉल डालेगा ना एक ओवर में यार, और एक ही एंड से डालेगा। आप अभी भी जो विकेट देके जाओगे ना, वो फास्ट बॉलर्स को देके जाओ। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे वही है ना सौम्या कि बात ये है कि हम 2021 में डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन, आपका प्लेइंग 11 है वो ठीक नहीं बना। आज 2023 में भी आप यही बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 को साइड में रख दें तो आप अपनी जो एबिलिटी है उस पर तो आप खरे उतरिए। रोहित शर्मा, हमने आज ही कितनी बार डिस्कस कर लिया कि आप उनके आईसीसी नॉकआउट मैचेस में जरा स्टैट्स देखिए, आपके पास वही है 200, और आपके पास 2 मैचेस में 100 आए, 2 मैचेस में 50 आए, कितने समय से। और आप देखिए 2021 की बात की हमने कि ओवल में उन्होंने एक 100 किया था, और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आप यहाँ पे स्टैट्स देख लीजिए, हम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, 2023 है, और करीब ही आपने बांग्लादेश के खिलाफ है। it's not about doubting Rohit Sharma's caliber or Rohit Sharma's talent, or how Rohit Sharma has played before. It's actually about how he's playing right now, and then how he's reacting after the matches. वो एक इंटेंट की बात आती है, आपको इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। ये काफी ज्यादा दो जो वर्ड्स हैं, मैं पिछले 1 साल से इन वर्ड्स को काफी बार सुनती आ रही हूँ। एक ही कंसिस्टेंसी, दूसरा वर्ड है इंटेंट। इंडिया जब भी बाहर कोई इंपॉर्टेंट मैच खेलने जाती है, बात यही होती है कि आपके बैटर्स कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, राइट। और दूसरी बात यह आती है कि आपके पास इंटेंट नहीं है। कब आएगा ये इंटेंट? डू यू थिंक कि अगर आप एक कोच और एक कैप्टन को चेंज कर देंगे तब कुछ चेंज आएगा? डू यू थिंक दैट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस राइट नाउ? से इंटेंट आपका खत्म हो गया था जब आपके विराट कोहली और रवि शास्त्री चले गए थे। एक बार मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि वो माइंडसेट है ना, जो अग्रेसिव माइंडसेट है, ये दोनों बंदे ही लाते थे। बाकी अभी जो हम खेल रहे हो इंटेंट के साथ, हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, बहुत सेफ खेल रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको जीतना है, आपको डोमिनेट करना, आपको रूथलेस करना है ना, जो रवि शास्त्री करते थे या विराट कोहली, जो वर्ड यूज होता था रूथलेसनेस के साथ क्रिकेट खेलना है, वो अब हम नहीं खेल रहे। अब हम एकदम सेफ क्रिकेट खेल रहे हैं, प्यारा क्रिकेट खेल रहे हैं, सबको चांस दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं। आप भी जीते, आप घर आइए, हम आपको जिता के देंगे। जैसे यहाँ पर अगर नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर हम खेल रहे थे, विराट होता या रवि शास्त्री होता, हम ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हरा देते। या यहाँ पर भी हम थोड़ा फाइट बैक करते हैं। यहाँ पर इंटेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इंटेंट देखिए, विराट से भी इंटेंट दिखता है आपको। कितने गिनवा लीजिए यार, इंटेंट किससे दिख रहा है आपको? रोहित थोड़ा लेट बैक, थोड़ा लेथार्जिक हो रहे हैं, थोड़ा उनके रिफ्लेक्सेस कम हो रहे हैं, आपको इंटेंट कहीं से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको विराट बाउंड्रीज मार रहे हैं, विराट कोशिश कर रहे हैं, वो जेम ऑफ अ डिलीवरी, ऑल्दो उसमें भी थोड़ा जाफा था, बट देन टेक्निकली यू हैव टू बी ऑन द बॉल, इन द लाइन ऑफ द प्ले, बट आप वो भी नहीं थे। तो अभी मतलब देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलर्स है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के साथ नहीं कर रहे, आईपीएल नहीं कर रहे, यहाँ पर विकेट पाटा है। यहाँ पर आप बेस्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन आपको मालूम है
कि यहाँ पर कंडीशन आपके फेवर में नहीं होने वाले, आपके इंडिया में भी नहीं होती यार, आप इंडिया में भी स्कोर नहीं करते, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना, आपको 10 दिन पहले से आके मैचेस, 2 मैच खेलना है एटलीस्ट 3-3 दिन यार। ऐसा थोड़ी होता है कि आप आके और पहले दिन ही पहले मैच में ही आपके डबल 100 मारेंगे, ट्रिपल 100 मारेंगे और जाके जीत जाएंगे यार। काउंटी खेल के गुजारा नहीं कर पा रहे यार आप, इनको खेल रहे हैं T20 खेल के आके टेस्ट। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि जो हो गया इस टेस्ट मैच में हो गया, यू कांट चेंज दैट। आप जब वो टारगेट 300 साढ़े 300 का चेस करने आओगे ना, आप तब भी ऐसे ही करोगे, आप इसी माइंडसेट से करोगे। हाँ, तो बात यहाँ ऑल इन ऑल सौम्या माइंडसेट की हो जाती है। मैं बंसल से एक कमेंट लेना चाहूंगी। बंसल, माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है? हमने यहाँ पर इंटेंट के बारे में बात कर ली है, हमने यहाँ पर कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर ली है, बट माइंडसेट, अच्छा मान लिया मैंने कि माइंडसेट की कमी है, तो एज अ कैप्टन आपके माइंडसेट की कमी है कि आपको लीड कैसे करना है टीम, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको बैटिंग कैसे करनी है? एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट रोहित शर्मा, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप ऑर्डर एज वेल। हम पुजारा के बारे में बात करते हैं। आप काउंटी खेल रहे थे, सबने बात करी कि नहीं नहीं पुजारा तो खेल रहे हैं, वो डिवीजन 2 था पर आप काउंटी में तो थे, आप खेल रहे थे वो। अब आप यहाँ पर आए हैं तो भी आप 13-13 14-14 रन करके जाते हैं। तो माइंडसेट की कमी तो सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं, बाकी प्लेयर्स की भी है। आई थिंक माइंडसेट और इंटेंसिटी और इंटेंट, जो दोनों चीज़ों पे बात हो रही है, लाइक इंटेंट तो इंटेंट की कमी दिख ही रही है कैप्टनशिप में भी एंड बाकी ओवरऑल बैट्समैन में भी। पुजारा की आप बात करें, पुजारा से मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। कल मैं जैसे देख रहा था, वी हैव बीन टॉकिंग दैट ही इज प्लेइंग इन द काउंटी फॉर ऑलमोस्ट 2 or 3 months नाउ, ही इज या पाइलिंग अप रन्स आफ्टर रन्स, 2-3 सेंचुरीज मारी उन्होंने काउंटी में, और इधर आके वो जिस तरह से आउट हो रहे, ऐसा भी नहीं था दैट इट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी लाइक द वन दैट गॉट विराट कोहली आउट, टू गेट आउट just by misjudging the line of the delivery after playing for 2 or 3 months in these conditions, that was these really disappointing on conditions। Pujara's part. हाँ मेरा एक and कहना है बंसल जी, या कंप्लीट। हाँ हाँ, go on ताउस भाई। तो मेरा एक कहना है, मेरा पुजारा, देखिए पुजारा का एक्सपेक्टेशन, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पुजारा से कि वो जाके 500 बॉल खेले, मुझे रन एक्सपेक्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ पुजारा बैटिंग हाँ करें, वहां पर एग्जैक्टली खड़े रहे, एग्जैक्टली, रन नहीं करें, मगर उनके चारों तरफ जो प्लेयर्स हैं वो इंटेंट दिखाएं, क्योंकि मतलब पुजारा में दूसरे एबिलिटी प्लेयर्स रन कर नहीं, नहीं सके। वो शॉट मेकिंग, स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर्स बिल्कुल ही नहीं है, प्लेयर बिल्कुल ही नहीं है। बैटिंग जब आपने एक्सपेक्ट एक बात करेंगे कि सही वो कही स्टेप आउट कि करके मारे या अगर कवर आपको ड्राइव क्लासिकल या डोमिनेट करे बैट्समैन को, चांस ही नहीं है भाई। आई डोंट अगर थिंक आपको सो याद हो, पुजारा, आप 500 आपको याद हो 200 ऋषभ 300 बॉल खेलिए, काफी बाकी दोनों इंपॉर्टेंट तरफ से एंड है, वहां पर खेले। अगर आपको यहाँ याद पर है ऋषभ पंत ही करते थे। सौम्या, ऋषभ पंत पुजारा की पार्टनरशिप इसलिए अच्छी थी क्योंकि पंत वाज द वन हु वाज स्कोरिंग Right. क्विक He एट was द the अदर aggressor, aggressor. and Pujara would हाँ, पुजारा stay वाज on the wicket. या Yeah, या nobody सुरम comes कनव and की जो ये बात nobody कर comes to the रहे हैं, जो stadium to कनव pay ने भी and watch कमेंट किया Pujara. था, हाँ, कनव ने भी He's जो the कमेंट किया है कि आप काफी डिफेंसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सौम्या, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ताउस फिर मैं आपके पास आती हूँ। ये कब तक चलेगा डिफेंसिव अप्रोच सुरम आपकी? और मैंने ये जो कहा, ये एक लेबल कर दिया आपने, डिफेंसिव अप्रोच है ये। कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है, इलॉजिकल अप्रोच है। कोई इसमें लॉजिक नहीं है, इस टीम सिलेक्शन के अंदर कोई इसमें तुक नहीं है। आपको जिसको मन करता है, वो चेतन भाई ने पिछले सेशन में बिल्कुल ठीक बात कही थी, आपका मन करा आप दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप खिलाने ले गए, ठीक है, आपने युजवेंद्र हाँ, चहल को बेंच कर दिया, आपने अक्षर पटेल को खिलाई जा रहे हो, 13 के इकोनॉमी से रन देकर आया है 20 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर, आप उसे खिलाई जा रहे हो। यहाँ आपने अश्विन को ड्रॉप कर दिया, यहाँ आपको ओपनिंग नहीं पता किससे करानी है, आपका विकेट कीपर, आपको पता है आपका विकेट कीपर टेक्निकली साउंड नहीं है, आप फिर उसी को लेके उतर गए हो। मतलब आई मीन दैट इज हॉरिबल, अगेन दैट इज हॉरिबल कैप्टनसी आई एम सेइंग। और ये डिफेंसिव अप्रोच तो हो पहले, डिफेंसिव एग्रेसिव तो बाद में आएगी, यहाँ अप्रोच ही नहीं है भाई, देयर इज नो अप्रोच। ये क्यों होता है, ये होता है खिचड़ी फॉर्मेट की वजह से। हम T20 में एग्जैक्टली खेल रहे हैं, हम ओडीआई में खेल रहे हैं, हम एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट में, हम सब डोमिनेट एग्जैक्टली करना चाहते हैं, मगर हम कुछ करेंगे नहीं, मगर हम किसी पर में भी परफॉर्म, क्लोज हम तो सब एक खेलेंगे मगर ये हम बात, डोमिनेट नहीं करेंगे किसी में भी। ऐसा नहीं होता ना क्रिकेट में। ऐसा अब आपको जैसे एक आप, विजन लेके चलना है, आपको पुजारा जैसा आपको एक विजन लेके चलना है, चाहे वो T20 यस एक लाइन में चलना है। यहाँ पर आप सब खेलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे स्टीव स्मिथ, आप फोकस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट पर, लबूशान, मिचेल स्टार्क, सब फोकस करें टेस्ट क्रिकेट पे, हमारी एशेज आने वाली, वो प्रायोरिटी। या हमारी WTC प्रायोरिटी नहीं थी, सिर्फ प्रायोरिटी थी आईपीएल। जो हो गया वो तो ऑब्वियसली आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, विच इज ऑब्वियस, बट देन यू हैव टू मेक योर प्रायोरिटीज राइट, विजन आप रखना है, गोल रखना है आपके पास। उसमें भी आपके पास देखिए, अजिंक्य उसमें रहाणे भी के क्या बाद कर रहे आपको हो, आप आईपीएल में भी क्या कर रहे हो। एक लास्ट T20 कॉन्फिडेंस में जो आईपीएल में परफॉर्मेंस दिया अजिंक्य, मतलब आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है आपके पास।
बैटर्स ही नहीं है आपके पास। अगर आप ये बात करें, ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए थे जॉश हेजलवुड, आपको हम्म, कौन लाए? माइकल नेसर, स्कॉट बॉटलैंड खेल बोलेंड खेलते ही नहीं है ज्यादा, मगर वो आए हम्म, क्या ब्यूटीफुल बॉलिंग की है। तो मतलब हम्म। आपके हम्म। पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि दे हैव अ यहाँ विजन, दे हैव अ गोल, दे एक हैव चीज देयर ऐड प्रायोरिटीज, करूंगा यार, क्लैरिटी इन देयर थॉट। Selection, यहाँ they पर नहीं है, also हमारे पास have कुछ नहीं। selectors out there. ये भी है यहाँ मैं उनके पास यहाँ मैं एक प्रॉपर चीज ऐड प्रोसेस है। करूंगा। मैं I'll come यहाँ to मैं you, I'll come to या, you. श्रीनी हमारे साथ या, जुड़ रहे हैं लंदन से। पहले श्रीनी को हम ले लेते हैं इस लाइव सेशन में कि वो जुड़ रहे हैं हमसे हमारे साथ लंदन से। श्रीनी, what would you make out of this day? End of day 3. Well, I wrote a piece for Cricket Next. उसमें I started it by saying that what this test match eventually has come down to is a question of only if. Okay, Hmm. the only if begins with 2 points. Number one, what? Why did we? Only if we had kind of batted first after winning the toss. The other only if is only if we would have picked Ashwin. 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 Okay, yeah, I was standing with a couple of former India cricketers. Ravi was there, all of them were there. I mean, generally we were chatting, like kind of everybody is like, that's the only question in everybody's mind. How can you? It's like, okay, someone brought out a very interesting point. He said, if you are the topmost run getter in your team, okay, Hmm. in a match as important as this, would you drop him? Absolutely not. Then how are you going to? How did you think of dropping your highest wicket taker? True. True. Maybe is that is probably how we think. That is that why we call it such a batsman's mindset that we talk about. This is Hmm. Rohit's first test match. I was expecting things from Rohit. I was Hmm. expecting him to be different. I really, I mean, he didn't play that. He didn't captain that one-off test match in England. He was Yeah, injured, he was and injured. Yeah. Jasprit Bumrah had Exactly. captained it. Yeah. Yeah. So practically, this was his first game, to out lead. of India. And I thought there was ordinariness written all over. I mean, I'm sorry, I mean, he won't like it, but there was ordinariness written all over. Today, I think he learned from his mistake. Today, if you see how he rotated the attack better, Hmm. actually, bowlers also looked a little more confident, of course. But then, at least when there is a Shami bowling today, I could see that there is a fine leg in place. Devan seemed completely out of place to me. So these Hmm. aspects. So if only, that's the first thing that comes to mind. The other thing that comes to mind is every time today, actually, every time somebody performed, there was a glimmer of hope. Every time there was a glimmer of hope, you saw the scoreboard and you saw that the target was going 200 plus, and then suddenly there was despair. So it was a True. day of hope and despair. हाँ, ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। और यही सवाल हम भी इसी चीज पर हम भी बात कर रहे थे श्रीनी कि आज जब हमने स्पिन देखा वहां पे होते हुआ तो सबको अश्विन की बहुत याद आई कि फिर वहीं पर जो डे वन पर चर्चा चल रही थी, जो प्लेइंग 11 सामने आई कि अश्विन नहीं है, आज फिर वही बातचीत हो रही है कि अश्विन क्यों नहीं है। बट यहाँ पर श्रीनी आपने होप की बात करी, कि थोड़ी थोड़ी होप्स नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप स्कोर बोर्ड पे देखें, बट देन ऑब्वियसली इट्स a tear of despair as well. What do you think? कल क्या होने वाला है? अगर आप जल्दी आउट भी कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इतनी अच्छी बैटिंग कर पाएंगे आगे तक? I know that we want good things to happen. I know that we want a miracle to happen here, and what exactly is the target we're looking at? 296 with 6 wickets left for Australia, right? Yeah. तो मैं कहता हूँ कि वो आज 6 विकेट पूरे हटा दो, 296 रखो, तो आई से इट्स आउट ऑफ इंडिया दिस, ओके। बट उसमें आप फिर वो 6 विकेट का कंट्रीब्यूशन और ऐड कर लो, so Hmm. that's your answer. See, tomorrow they'll bat till at best तुमने बहुत ज्यादा अगर मतलब अच्छा bowling कर दिया इंडिया ने, if luck goes with India and everything sides with India, then maybe the first 1.5 hours is when Australia get to bat, right? Then they will take it beyond 330, 340. And हाँ. that is the kind of wicket that they had. Unless they have a very miserable day and you're saying that there is some sort of a breach and 10, 15, 20 runs and they are bowled out. And Hmm. that's unlikely to happen, right? So maybe you're looking at a 340, 350 plus at a minimum. At a minimum.
and that I think puts things massively. The more this test match goes forward, the more your first day's play, your first innings, the runs that you gave away, the toss, the decision after winning the toss, the decision to drop Ashwin, so all of that will keep on coming to hurt you more. The Absolutely. more this test match goes forward. True, So how's true, the, I want to absolutely. ask you, Shini bhai, how's the weather? Is it going to rain? I mean, the last time I saw the weather Awesome, before the well, test match, awesome. they were the rain was supposed to. The forecast said that 2 days of rain, fourth or fifth day it will rain heavily, and there will be Saturday, Yeah, thunder so Sunday showers. So what's the predictions. scene? fifth day, there are showers predicted. Somebody even said thunderstorm. Okay. But Yeah. see, you're talking about England. The thunderstorm could be 15 minutes away, and you won't know. If the prediction has said that it'll be here, it'll be here. They get their weather predictions Very extremely good. right. But Yeah. you can't make that out looking at the skies right now. So right now, what you're looking at is as good as weather in England can get. Like I'm Yeah. look at me. I'm like standing without a jacket here. I'm like I'm out in the open, and no, I'm not even standing in the sun, really, right? And there is Mm. sun behind me, if you see. Yes, yes. So, Yeah. so yes, but I'm not even standing in the sun, and it's pleasant. I mean, it's cool wind, and like it's very pleasant. But typically good English weather. Should But we start आपने Srini, singing? कभी Should we start singing Kale Mega Pani To Barsao in the test match? Srini, Kaz bhai, one thing, we हाँ are back to the moment जहाँ हम बारिश को expect कर रहे हैं कि इस तरीके से आ जाए और हम बच जाए. हाँ The नहीं थोड़ा नहीं, सा वो तो आप नहीं, बारिश इतनी बारिश बारिश तो अगर नहीं आ होगी. भी जाती है, बारिश आ भी जाती है तो बारिश का प्रेडिक्शन परसों है, और वो बारिश हो भी जाती है तो याद रखना एक रिजर्व डे है, हम हार के ही जाने वाले हैं. हाँ so मन anyway बना लिया आपने, so, मन बना लिया what आपने. frustrating देखो, is, no, अगर 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 बाय सम फेट ऑफ लक, बारिश आ जाती है, पूरा मैच धुल जाता है, सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है that I'm going to take away anything different from a loss here. I'm true, not going true. to take away anything different. The only way I'm going to change my mind, except that I was wrong, is if for Rohit Sharma, Virat Kohli, or somebody were to stand there and give me the chase of a lifetime. You give me a chase of a lifetime, I will eat my words. I'll then not say anything. But that said, no, I'm 300 plus. I'm going to kind of weigh my bets very carefully. But Srini, what I have a very the interesting frustrating question part, for you out there. I have a very interesting question. Are you enjoying it? Are you enjoying the test match? Regardless of how India is playing, are you Of enjoying it? course, of course. I mean, you see, you can't not enjoy Test cricket in yes, London, in England. Forget anything. In England, and that too, Test cricket at the Oval. There is no way that you cannot enjoy. Like, I mean, I wouldn't care so much if this Test match was as Lords. वो history वगैरह, MPC, all of that, वो ठीक है. But Oval is something else. Oval, Nottingham, Trent ये दो venues ऐसे हैं कि you ask me for an arm and a leg, I'll give it to watch a test match here. Well, Lords and all, I don't care. Edgbaston is changed way too much. Some of the other grounds is all fine. But ये जो ground है ना, मैं rights holder नहीं है हम, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता. But ये जो ground है ना, इसका मजा अलग है, boss. It is very history written on every brick and tree here. You enter from the Jack Hall's gate, you see the obituary, Sporting Times obituary, you see that Alex Stewart gate, Vauxhall gate, and I've been coming here, well, like, the first time I came here was 2007 to cover a test match when Anil Kumble scored a century. yeah, This right. gets you. This venue gets you. I mean, this is like you know, regardless of whether you are a journalist, you are whoever you are. Just as a cricket fan, this should be a test series in England should be on the bucket list. For a holiday or noted, whatever. I mean, Yes, Thomas. noted, noted. Well, I believe that also, Srini is enjoying it. I have no idea how Indian fans are enjoying it or not. I mean, I switching I on. was I was I was on the upper tier here, watching the game from there. You name it, the who's who of from Mick. You're walking and suddenly there's a Mick Jagger sitting there.
and then you're walking, and suddenly there's a Mark Knopfler sitting there. You're walking, suddenly there's a the Shashi Tharoor was here to watch. You name it. I mean, like, it's proper. This is beautiful Test cricket. I mean, it doesn't get better Yeah, than this. And you're not taking yeah. selfies with them. Sorry, no, I've Abhi, never. I have in my entire life, 20, 21 years of whatever cricket I have covered, I have only taken two selfies. Only two. As in, I have made a request ki boss, I need a picture. Only two pictures. कौन है वो Brian कौन है वो Lara, Sachin Tendulkar. That's it. Okay. And I have not been enamored. The only other selfie I would have wanted for myself, but I was too young and way too enamored to think of anything. And वो time पे selfie culture भी नहीं था. But in 2006, I was lucky enough to go to Imran Khan's house in Lahore, Zaman Park. Mm, Okay. Yes, his house. वो बनता तो फिर एक लाइफ में सेल्फी हो तो इमरान खान के साथ हो, नहीं तो आई डोंट केयर. True, true. Well, Srini, what's most interesting part here is कि पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा बात चल रही थी कि playing 11 ऐसा नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं किया, रोहित की कैप्टेंसी ऐसी, ये वो, all of that, and all those negative thoughts. What we needed right now was this, the things that you shared with us, how out there, how the test match feels out there. Another thought came to my mind. In fact, for our sister concern, Money Control, I wrote a piece for it, and I said that, you know, this is the pinnacle of Test cricket, right? This is the format that you want to protect and make it shine, and from a longevity perspective, this is the format that you want the youngsters to pick up and say, this is how cricket should be played. Now, if that is the thing, why are you not sprucing it up? You're making a WTC final, and this whole WTC affair look like doing something for the sake of doing it. Yeah. Like, for example, number one, you're running a 2-year cycle. A 2-year cycle is happening between 9 test playing teams, right? Now, none more than 2 countries are playing the same number of test matches every year. Yeah. In those, test series every year. In those series, none more than 2 countries are playing the same number of test matches inside a series every year, right? Some are playing 2 tests in a series, some are playing 4 series a year, some are playing 5 tests in a series and 5 series a year. It's all very jumbled up. Right. And in that, none of us, if I were to ask anyone right now, tell me how exactly does the points table work in a WTC? I don't think anybody has an example. We all look left or right for somebody to give us the cue in terms of how it works. That said, you still go through a 2-year cycle to make it all culminate into a grand affair. It's the final, which you have said is probably the ICC title for the greatest test team in the world, right? That's how you identify. वो आप ये टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल हटा दो. You can do this by rankings also. Whoever is number 1 and number 2, make them play the final. And so why do you need to do this? Now, if you have to do this, then you have to make this into a grander affair. It can't be just a one-off test match in 5 days and suddenly you say, "Acha, haan, chalo. This is what is happening." So are you saying that if test cricket is the pinnacle and if that is the most important format of cricket, can't you dedicate 25 days, 1 month to the format? You can, right? Right. So Right. uh, you know, pick modern day examples from other sports. Pick a modern day example from, let's say, the NFL, the National Football League in America. It is the grandfather of all sports league everywhere in the world. It's 105 years old, going on 106, right? So वहाँ पे the Super Bowl is the a- annual playoff, the biggest match of the NFL, right? Right. वहाँ पे when Eminem comes to perform, Eminem performed in the last Super Bowl. Okay, that is as big an artist that gets in America. He's performing. Do you know Eminem doesn't get paid to perform at Super Bowl? It is Eminem's privilege. It is a privilege that Super Bowl has asked him to come and perform. Yeah. You don't get paid. हमारे यहाँ हम पैसे देके डिवाइन को बुलाते हैं. आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ.
right? So Yes. you want to build a property, you kind of need to build some amount of self-respect first, some amount of Yeah. dignity, We some need to amount of glamour, yeah. yes. Now you are talking about a sport like cricket which is steeped in 400 years of history. That's no small joke. Yeah. 400 years of history, you know True. and second, cricket as a sport is the world's second most addressable sport on television. That is no small number. Right. Hmm. NFL, basketball, everything from an American market standpoint is fine, but globally speaking, after football, no other sport brings you as many eyeballs in front of the television like cricket does. Hmm. So for a True. sport this big, for a sport earning this kind of money, for a sport seeped in this kind of history, you have a Mick Jagger sitting in the stands, right? You have an Eric Clapton and Mark Knopfler. You should make this into a grand 3-day affair, which kind of take it from Mumbai to Sydney to London to Barbados, you name it, to Cape Town. This should be the one affair of in cricket every 2 years that the Hmm. world should look forward to. Instead, what do you Absolutely. have here? Just one random test match out of the blue at a neutral venue where both teams don't understand conditions. What do you get? Nothing. Absolutely. And for that, you really need to have some A class performances as well. Now, when we are looking at WTC 2023 final, at the end of day three, we are looking how Australia have taken that lead. Thank you so much, Srini, for joining with us from London. I know that you had a crunch of time, but it was great listening to all these stories from you. Thank you so much, Srini. Bye bye. Bye. Now, talking about this test match, we have heard some great stories, and that's what we needed as a refresher. Because from the past 3 days, we were talking about how this team hasn't performed, how Team India didn't take good decisions, and all of that. Now, at the end of day three, and as we are wrapping this show, I have quick questions. First is of Pratyush, who is the winner in case of a draw. Soumya, you can answer it. Just quick Because this answers. would be shared, the trophy will be shared. It will be shared. Yeah, the trophy will be shared, but will it be justified with the way India have played? That's the big question Look, out there. no, you can't really question that thing. Okay, so I always have this issue with with the narratives that go around. कि यार Uh, ट्रॉफी शेयर हो गई या कोई बाउंड्री काउंट पे जीत गया तो वो डिजर्व करता था, बिल्कुल डिजर्व करता था। अगर आप एक टीम फाइनल तक पहुंची है तो वो डिजर्व करती थी। I exactly. am Okay. disappointed. I am disappointed with the way they have played right now in this game. तो Let's डिजर्व see. करते Let's see and what happens. So let's go to Bansal, and Bansal can answer this question. Can Australia give target 350, and then can India win? Do you think India can win? Are you keeping any hopes alive for India to win this test match? See, I would want India to chase down such target, but practically speaking, it seems very difficult. Like, and India does have the capability. I'm not saying that Indian batters cannot chase down 350, a target of 350, but looking at the way this match has gone down, I don't think they'll be closer to. Hmm. They'll reach even closer to 350. ask तो KS ताउस क्या Bharat and है? Shubman to ऑप्टिमिज्म listen. ठीक है, इतना ऑप्टिमिस्टिक होना ठीक है या नहीं? नहीं, ये मैच में तो हमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। आई नो इंडियन फैंस लास्ट ताउस अगर में 9 पूछ विकेट रहे भी गिर थे गए कि फिर भी क्यों होपफुल रहेंगे ऑप्टिमिज्म रखा कि है। चेज ताउस में हो बता जाएगा, दें बट कि See, yeah. हाँ, तो उसमें आपको बता दूँ जो पिछले हमारे लाइव सेशंस हुए, वहाँ पर हमारे साथ चेतन थे, विनीत थे, सबने कहा कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है ऑप्टिमिज्म की, यहाँ पर आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैच को देखना होगा। बट अभी कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं कि थोड़ा-सा तो ऑप्टिमिज्म आप लेकर चल सकते हैं, 10%, 5%, isn't it? See, hope रखना तो अच्छी बात, it's a good thing that you keep hopes and like then heartbreaks also happen. तो आप जितना hopes रखेंगे, जितना वो रखेंगे, तो heartbreak उतना ही बुरा होगा. So, but then anyway, this is cricket. यार. Anything can happen at the end of the day. Miracles do happen. We won in Australia, but then अगर 350 या 400 भी रखे in good comeback, a double hundred, which is impossible because you have Nathan Lyon, because you have Scott Boland, who's still bowled well. I mean, then you have Mitchell Stark. You have some of the best bowlers in the world bowling at you on those kind of wickets where there is good bounce, where where Virat Kohli struggles against a Jaffa. So I mean, this हाँ, is I mean, you can keep hopes. ठीक है, interesting हुँ, match रखने के लिए you can keep hope, but then it's a difficult. I mean, I don't. वो faith नहीं है. We have the best batsmen here. We have हुँ, Virat Kohli, Rohit Sharma, we have Pujaras and the Rahane, some of the biggest in the world. But still, we don't have. We are not keeping hope.
I don't know. There is some serious problem in our in the team, which Absolutely. is That's a why. very Which serious is why. question. Exactly. Which is Absolutely. why Now, if you look we at the should have. top order, we have Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, and Pujara. And let's keep Shubman Gill aside because he's a new one, just 23-year-old. We have the experienced ones out there. Pujara, Virat Kohli, Rohit Sharma, and even then, if we are asking this question, so I Soumya, feel just like crying. even Yeah. then, I if we feel like honestly, I feel like question, crying. Yeah. and Look, it's not only you about that I'm can't. pointing at single batters. You just Look, need to take the responsibility one by one in such crucial yeah, matches. Just a quick take, Soumya, and then we'll wrap it up. Yes. yeah. So see, you can't really keep aside a Shubman Gill right now. I'll tell you why. Two things. When you're Hmm. playing at that level and you get a target, you're a part of that 11. Responsibility is on you. Second is Hmm. you have prove your worth. आप वो चीज कर सकते हो. आप एक 90 का स्टार्ट दे सकते हो, 95 का स्टार्ट दे के जा सकते हो, या प्रॉब्ली 100 का स्टार्ट दे सकते हो, क्योंकि आप And इतने Gill इंपॉर्टेंट did that प्लेयर in हो. Australia. Gill has done that, exactly, that is what I'm saying. और उस समय वो No, उनका we're करियर not और ही negating the fact that ठीक है. Gill cannot do it. It's just about the Second, experience out there the other batters have yeah, in the top the order. second thing is जो हम कल भी बात कर रहे थे कि एक लाइव सेशन के अंदर द हंगर, क्योंकि आपने इतने स्पिनिंग ट्रैक्स इतने वो बना दिए ना कि दूसरा रन ना बना पाए, तो हम भी नहीं बना पाते. वो जो हाँ, हंगर है ना वो खत्म हो गई है. इस पूरे हाँ. लाइनअप में इतनी एबिलिटी है कि ये 400 रन भी चेस कर सकते हैं. आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग सेइंग दिस. ठीक है. अब बारिंग के एस Absolutely. भरत, बारिंग के एस भरत, इस पूरे लाइनअप में इतना इतना जिगरा है, इतना इतना बैटिंग बैटिंग इतना स्ट्रांग है इस पूरे लाइनअप का कि वो 400 रन चेस कर सकते हैं. ठीक है. इट Well, इज जस्ट Soumya, अबाउट द वो है पर इट वो इज जस्ट अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है. ये देखना होगा कि बिल्कुल कल क्या वो एग्जैक्टली. नजर आ मैं सकता कल है भी या बोल रहा हूँ. नहीं. So let's see what happens tomorrow. Let's या wait for it. Thank you so पहले much, ऑल आउट तो gentlemen. कर लो, पहले ऑल आउट तो कर लो. Yes, yes. Thank you so much, everyone, for joining with us.